Good morning. Today the topic is electrical discharge machining. Electrical discharge machining is a thermal material removal process in which material is removed by local melting or vaporizing smaller areas at the surface of workpiece. The EDM process removes material by controlled erosion of the material by repetitive electric spark between the work and tool submerged in a dielectric medium. So next is working principle. Working principle of electrode discharge machining is based on the erosion of the material by repetitive sparks between the workpiece and the tool submerged in the bath of the dielectric medium. The workpiece and the tools are two electrodes connected by first pulse generator, second is servo driving system. In pulse generator, the electrical tool is shaped tool of required profile to be cut on the workpiece. The workpiece and the electrode are separated by a gap to establish a pulsated spark across which the dielectric fluid flows. Second is the servo driving system. It maintains the spark gap for continuous operation with desirable feed of the tool. Next is classification of electrode discharge machining. It is based on the type of tool electrode used and its area of application. So these are classified into first sinking by machining. Sinking by electrode discharge machining is further classified into two types, that is drilling by electrode discharge machining. Second is die sinking by electrode discharge machining. So next is applications of electrode discharge machining. The process is applicable for a wide range of material which includes die, tool, steel to soft copper and high components like forging dies to delicate workpieces such as copper parts for fitting into the vacuum tubes. The process is useful when repetitive shapes are required produced from a shaped electrode tool and when machining accuracy is important in workpieces which are already heat treated. It is finding a lot of applications in machining difficult to machine material. It is used in space industries, hard carbide, refractory metal, sand heat treated steel. So next is it is used in many operations like milling, grinding, drilling and finishing operations as to performed at different stages. It is reduce the machining components. So next is higher, second point is higher material removal rate produces rough cut surface with molten recast structure with proper surface texture and low fatigue properties. It टू गेट ए गुड सरफेस फिनिश, इसके अंदर हमें क्या गुड सरफेस फिनिश मिलती है, फिनिशिंग कट होती है विद लो मटेरियल रिमूवल और ए सेपरेट फिनिशिंग ऑपरेशन is essential to remove cast layer. So these are the figures of electrode discharge machining. So next is electrode discharge machining. Electrode tools are made by forming casting machining or by powder metallurgy. In this electrode discharge machining tool as a small whose diameter is 0.1 mm diameter have been successfully used in EDM process. Next is the tool material used in electrode discharge machining should possess high material and vaporizing temperature like graphite or high thermal conductivity like copper. Second point, it should possess other properties like ease of fabrication. Third, the cost is another consideration in the selection of material as a tool material for EDM. The main factors determine the suitability of material for application as electrode tool material in EDM are: first, higher metal removal rate; second, lower tool wear; third, high degree of electrical efficiency; last is minimum tool wear condition;
can be obtained in electrode discharge machining using graphite electrode with frequency of about 5000 kilo. So a power supply so a power supply. A coating of steel or graphite electrode tool is given to control the actual wear of graphite tool, but the no wear machining condition produces the workpiece machined surface very much rough for most applications, and a finishing cut is invariably needed. Different electrode material used in EDM are characteristics in the given table shown in the slide. In first column, the different types of material, that is just like graphite, copper, brass, tungsten, copper alloys, cast iron, steel और zinc alloys. इन सेकंड कॉलम मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल का रिमूवल रेट बताया गया है, कैसे वो हाई किस किस में हाई है, किस किस में लो है, किस में वो हाई इन रफिंग है. थर्ड कॉलम में बताया गया है कि बेयरिंग रेशियो कैसी होती है. ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, लो होती है, कॉपर के अंदर लो होती है, ब्रास के अंदर हाई होती है, टंगस्टन के अंदर लो होती है. नेक्स्ट फैब्रिकेशन बताई गई है कि ग्रेफाइट के अंदर इजी हो जाती है, कॉपर के अंदर भी इजी होती है, ब्रास के अंदर भी इजी होती है, टंगस्टन के अंदर डिफ़िकल्ट होती है, टंगस्टन कॉपर के अंदर भी अलॉय के अंदर भी डिफ़िकल्ट होती है, और कास्ट स्टील और जिंक अलॉय के अंदर ईजिली होती है. कॉस्ट बताई गई है ग्रेफाइट की जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कॉपर की भी बताई गई है हाई है, ग्रेफाइट की भी हाई है, ब्रास की लो है, टंगस्टन की हाई है, और टंगस्टन कॉपर की अलॉय की भी हाई है, कास्ट आयरन स्टील और जिंक की क्या है, लो है. एप्लीकेशंस क्या है, ग्रेफाइट को हर एक मटेरियल मेटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, कॉपर को भी हर मेटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ब्रास को भी हर मेटल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, टंगस्टन को ओनली फॉर स्मॉल होल्स के अंदर, टंगस्टन को यूज़ किया जाता है, टंगस्टन कॉपर अलॉय को यूज़ किया जाता है एक्यूरेट वर्क करने के लिए, जहाँ पे हमें टू द एक्यूरेसी काम करना होता है. कास्ट आयरन को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किया जाता है, स्टील को फिनिशिंग के लिए किया जाता है, और जिंक अलॉय को ऑल मेटल्स के लिए. ओके, थैंक यू.